The Union Finance Minister and Defence Minister Nirmala Sitharaman there will be holding a media briefing at the end of the CCS meeting. Let's listen in to what they have to say. Some key decisions taken in the CCS meeting will be debriefed to the media in a little while from now. 1 2 3 4 देखो ऑडियो देखो 1 2 Are you ready? Union Finance Minister and Defence Minister Nirmala Sitharaman then. Let's listen in. And discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice, and expressed its condolences with the bereaved families. The CRPF, of course, will make detailed arrangements with regard to transporting their bodies of the deceased to their families. A detailed assessment of the incident was also taken. There are several details which are discussed in the CCS which are normally not be disclosed, but there are a few points which have to be shared with you. The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The Most Favoured Nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. The Ministry of Commerce will issue the necessary communications in this regard. The Ministry of External Affairs will also engage with the international community to make sure that the Comprehensive Convention on International Terrorism, which has been pending for over 3 decades before the United Nations, particularly because of the definition of the word terrorism, is now adopted at the earliest. As far as our security forces are concerned, they will be taking all possible steps. Firstly, to ensure that full security is maintained, and secondly, to ensure that those who have committed this heinous act of terrorism and those who have supported it actively are made to pay a heavy cost for it. The Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh Ji will be leaving for Srinagar along with a team of officials from our agencies and Home Ministry today, and on his return at the earliest, possibly tomorrow, he will be calling an all-party meeting to brief them about this incident. आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ
सिक्योरिटी की एक बैठक हुई। जो कल पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई है उसका आकलन करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए देश को। एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव जो लोग शहीद हुए और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग किया है इस राष्ट्र के लिए, उन जवानों के प्रति पारित किया गया। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और सीआरपीएफ पूरे कदम उठाएगी कि उन शहीदों के शरीर उनके परिवारों तक पहुंचाए जाएं ताकि पूरा देश उन शहीदों को सम्मानित कर पाए। जो वहां पर घटना हुई और वहां की वास्तविक स्थिति है उसका आकलन भी किया गया। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पर देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय इसके संबंध में जो सूचना जारी करनी है वो करेगा। 1986 में आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मूव किया था, जिस पे बहुत चर्चा हुई है, लेकिन वो अभी तक पारित इसलिए नहीं हुआ कि उसमें टेररिज्म आतंकवाद शब्द की परिभाषा को लेकर अभी सबकी सहमति बाकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को ताकि उसको तुरंत पारित कर दिया जाए। जहां तक हमारे सुरक्षा दल हैं वहां पर शांति और अमन बना रहे कश्मीर घाटी में, सुरक्षा के पूरे कदम कि ऐसे कोई और घटना ना हो वो इसको अपनाएगी और वो कदम लेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। दे हैव टू पे अ हेवी प्राइस, अ हेवी कॉस्ट फॉर इट। इसके लिए वो पूरे कदम अपने आप उठाएगी। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आज श्रीनगर जा रहे हैं। वहां पर वो दिन भर बैठकें करेंगे और लौटने के बाद संभवतः कल वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर वहां की परिस्थिति का जायजा उन लोगों को देंगे और सभी राजनीतिक दलों के साथ इसकी चर्चा करेंगे ताकि पूरा राष्ट्र एक आवाज में इस परिस्थिति में रिएक्ट कर पाए। So when you say they will pay a heavy price, you mean Pakistan or non-state actors? You see, I have made my statement. What had to be done? Normally there is no briefing after the CCS. What I had to say, I have already said, and I think you will also understand the restraint of the situation and desist from any further questions. Thank you. Well, those are live visuals of Union Finance Minister and Raksha Mantri Nirmala Sitharaman. They're briefing the media after the Cabinet Committee on Security that met. The meeting that lasted at Prime Minister's residence a little over 55 minutes was what the meeting lasted. Key takeaways from the meeting: push for complete diplomatic isolation of Pakistan, a detailed assessment of what happened in Pulwama being taken, 2 minutes of silence for those soldiers who lost their lives, the paramilitary forces who lost their life, 2 minutes of silence in the CCS meeting, and India withdraws that MFN status, most favoured nation status, to Pakistan. And the